Hi everyone. I hope you all are preparing well for your exam, whether it is CUET, whether it is JMI. So in today's class, we will be discussing the answer to first mock test. Okay, we will be talking about first mock test. I have 20 questions with me on English and we will be discussing them. Right, so first is Citizen Kane dash by many critics as the greatest film that dash in 20th century. So when you look at this sentence, it is basically giving you a sense that there is this movie जिसको चूज किया गया है बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा जो कि बेहतरीन मूवी जो बनी है 20th सेंचुरी में. नाउ लेट्स सी 20th सेंचुरी की वो बात कर रहे हैं और अभी हम हैं 21st सेंचुरी में यानी कि पास्ट की बात हो रही है. सो सिटीजन केन हैज बीन चोजन, ठीक है, by many critics as the greatest film that was made in 20th century. So C is the right option here because if you fit chosen is not making sense. Okay, Citizen Kane chosen, it is not making sense. Citizen Kane chooses by many critics, it's not making sense. It will be either has been chosen or was chosen. Now, when we look at the second option, Citizen Kane has been chosen by many critics as the greatest film that is made नहीं आएगा क्योंकि is हमें present tense show कर रहा है, ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं 20th century की. So essentially we need to talk about past, and when we talk about past, was made will be the right answer. Okay, so C is the right answer here. Has been chosen and was made. Clear? Now let's move on to the next question. It is a similar question based on tense. Okay. Now I dash on this assignment for 2 weeks. हमने पढ़ा था कि जहां पे भी since और for आएगा वहां पर perfect continuous हमारा आता है. So we have to first find कि यहाँ पे किस में perfect continuous है, तो C में है. I have been working on this assignment for 2 weeks and I hope I will, ये it है, ठीक है, it मानिएगा आप इसे, I will finish it soon. So both of the options are making sense and therefore again C is the right answer. Okay. Let's go on to the next question. This is arranging the following in correct sequence. So I told you कि सबसे पहले हम subject ढूंढते हैं. So the minister, फिर हम verb ढूंढते हैं alleges, फिर alleges object ढूंढेंगे threat from the opposition. The minister alleges from the opposition, threat is not making sense. So essentially first हमारा A है क्योंकि subject है, second हमारा C है. अब A और C हमारा B और D में पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में. हमें देखना है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ है, तो दैट इज A C D B. D is the right answer. Clear? Moving on to the next question, auxiliary verbs. Auxiliary verbs जो होती हैं वो helping verbs होती हैं basically. Okay, जो कि हमें बताती हैं verb के बारे में, ठीक है. For example, she is working hard. Radha has gone to gym. Now यहाँ पर जो ये is है और has है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही हैं, प्लस ये हमें टेंस आइडेंटिफाई करा रही हैं. जब is आ रहा है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस चलता है, has आ रहा है तो हमारा परफेक्ट टेंस चलता है, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही है कि हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं एंड दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब. देखो वर्किंग के साथ, वर्किंग इज द मेन वर्ब, उसके साथ इज आ रहा है. ओके, इट इज शोइंग द टेंस, यानी कि हमें पता चल रहा है ना कि ये जो वर्किंग हार्ड है ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इज यूज किया है. ऑप्शन में भी दो ही राइट हो सकते हैं, सो बी इज द राइट आंसर बिकॉज बी एंड सी आर करेक्ट. Let's move ahead. Question number 5.
Choose the appropriate option to complete the sentence. इसमें A आंसर सही है. Hardly had the rocket been launched when it began to go off course. रॉकेट अभी लॉन्च हुआ ही था कि वो अपने रास्ते से भटक गया, ऑफ कोर्स हो गया. ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लगा कर देख लीजिएगा, दे विल नॉट फिट. ओके, choose the appropriate options to complete the sentence. Footage of the conversation on a park bench has been uploaded dash YouTube, where it has been seen by 16,000 people around the globe. इसमें आंसर है 2. अगर ऑन होता, अपलोडेड ऑन यूट्यूब होता तो हम ऑन टिक करते, बट नहीं है तो 2. एट नहीं होगा. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर एंड ऑफ बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, हम कहते हैं ना, आई हैव डाउनलोडेड इट, प्लीज अपलोड इट टू ड्राइव. आप ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, ऐसे ही यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए. तो 2 इज द राइट आंसर. नाउ सी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जब हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं हमारी सकर्मक क्रिया, है ना. हमने बात की थी सकर्मक की, जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है. ठीक है, तो जब हम सेंट की बात करते हैं, सो उसने भेजा. क्या भेजा? कुछ तो भेजा होगा ना. मान लीजिए लेटर भेजा, सॉरी, कुछ तो भेजा ही होगा. बस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वर्ब यहाँ पे एक वर्ड आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, कर्म आएगा ही आएगा. ओके, सो सेंट विल बी योर ट्रांजिटिव वर्ब. स्लीप क्या है? आप सो गए. आप ये स्लीप को, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि स्लीप के साथ कोई सब ऑब्जेक्ट आए, ये जरूरी नहीं है. तो स्लीप हमारा क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, हैप्पी क्या है? अब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, हम देखेंगे किसमें ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है. हमें ये तो पक्का पता है ना, तो ए ऑप्शन मैच कर गया. बिकॉज किसी और में भी ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि ए का फर्स्ट और बी का सेकंड हो. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8. चूज, just give me a minute. Choose the choose sentence which has verbs used to denote actions that are progressive or are going on the time of speaking. Basically यहाँ पे आपको बताना है continuous. जब आप बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा है, यानी कि present continuous की बात हो रही है. तो present continuous कौन से हैं? She is plucking flowers, we are watching TV, यानी कि A और C. So B option is the right answer. यहाँ पे लिखा है ना, at the time of speaking. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम वही काम बताते हैं जो उस टाइम चल रहा होता है. ठीक है, तो वो काम कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. वो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सो ए एंड सी आर द ओनली वन विच आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव एक्शन, दैट इज शी इज प्लकिंग फ्लावर्स, वी आर वॉचिंग टीवी. आई हैव बीन टू द डॉक्टर whose name appeared in the New York Times. ठीक है, एक ही डॉक्टर होगा जिसका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स में आया होगा. स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है तो द आएगा. ठीक है, now when the action, we have two statements, one is assertion, another is reason. We have to find out which one is correct. Okay, which combination is correct. So when the action as well as the time is considered unfinished, the verb loads up on present perfect from helping verb to be and to have and change to progressive form. ओके, ये कहना चाह रहा है कि जब कोई एक्शन अनफिनिश्ड होता है तो वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में बन जाता है. बेसिकली कहना चाह रहा है कि आपका, मोमेंट, आपका कौन सा टेंस, जब कोई काम अनफिनिश्ड होता है, ठीक है, जब कोई एक्शन अनफिनिश्ड होता है, तो हमने पढ़ा था वो किस में होता है? वो सिर्फ सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है. हम कहते हैं ना, वो इतने, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days, मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ, यानी कि अभी भी करता आ रहा हूँ. ठीक है, when you use this form, it looks like these examples. Western countries have been waging wars. I have been drinking tea all day. Okay, so both assertion and reason are right. ठीक है, दोनों सही हैं. एंड क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, बिल्कुल है, बिकॉज बोथ आर राइट, बोथ आर रिलेटेड. सो ए इज द राइट आंसर. ओके, let's move ahead. Question number 11.
Choose the appropriate options to complete the sentence. He drove with dash care and hence he was fined by traffic. ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस ने फाइन किया, यानी कि वो केयरलेसली चला रहा था. अब केयरलेसली का तो लिटल ही बन रहा है, तो he drove with little care. B is the right answer. Question number 12. Adjective describes, identify, and quantify people or things and usually go in front of a noun. They change if the noun is plural. Okay. So we will understand it by an example. This is a big apple. Okay, usually go in front of a noun. ये statement ठीक है, big apple. ठीक है. These are big apples. अब यहाँ पे हमारा नाउन प्लूरल है, बट जरूरी नहीं है कि ये चेंज हो रहे हो. ठीक है, चेंज नहीं हुआ. देयर आर द शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. ब्यूटिफुल अभी भी है. अगर मैं नाउन प्लूरल कर दूं, दे आर ब्यूटिफुल गर्ल्स, मैंने प्लूरल कर दिया नाउन को, तब भी हम ब्यूटीफुल ही यूज कर रहे हैं. सो 1 इज राइट and 2 is not right. It is not right. So statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect. Just a moment. This one is the right answer. Okay. C. This is right. This is not right. This is right. Clear? Let's go ahead. Choose the appropriate option to complete the sentence. In the sentence, a beautiful child, the word beautiful, ये word है, word नहीं है. The word beautiful is an example of, क्या कौन सा है हमारा, क्वालिटेटिव है. क्वालिटी बता रहा है ना, ब्यूटीफुल, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. B is the right answer. Question number 14 is related to a passage. Milpa Alta is the region to the south of Mexico City. It has a famous volcano, Tehuelti, and 12 villages and towns. Milpa Alta is also famous for Christmas celebrations and it feeds huge number of people. The cooks make about 60,000 meals. They also make about 15 the less than 1 week. The meal is one of the activities for people who go on a walk to the cave of 𝐂𝐨𝐿B. It's an important place for people away, and the walk begins on 3rd of January. About 20,000 people go on the walk each year. That's 20,000 hungry people. Each year, the organizers of the meal change. This year, Virginia Meza Torres and her husband, Fermin Lara Zienes, are the organizers of the meal. First is the cook make about 60,000 meals. This is correct because यहाँ से आ रहा है ना? The meals are made from wheat and have different fillings. We don't have what the meal is made of. We don't have कि मील किस चीज से बनता है, ये हमारे पैसेज में नहीं लिखा गया है, राइट? तो हम स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मानेंगे एंड स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग मानेंगे. ओके, बिकॉज इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि मील जो है वो किससे बनाया जा रहा है. व्हीट एंड हैव डिफरेंट फिलिंग्स, it is not mentioned. Okay, so I think first is wrong, right, and third is incorrect. So these passage, there are some grammatical corrections in this passage that is required. For what I have with me now, I think C is the correct, but if there is any change, we will let you know. All right. Question number 15. Choose the appropriate option to complete the sentence. I spent the little money I had. मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे वो भी मैंने खर्च कर दिए. ठीक है? I spent the little money I had. Reshma dash working for a local newspaper without even graduating from high school and she dash herself through her journalism ever since. Okay, अब इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि रेशमा ने शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया था. And
शी इज सपोर्टिंग हर सेल्फ एवर सिंस, वो तब से अपने आप को सपोर्ट करती आ रही है, तब से, सिंस उस वक्त से। जब हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाए कि पहले कोई काम शुरू हुआ है और अभी तक कर रही है, तो हम कहाँ पे जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास। तो हैज बीन सपोर्टिंग, रेशमा बिगेन वर्किंग, उसने शुरू कर दिया था, बी इज द राइट आंसर। रेशमा बिगेन वर्किंग एंड शी हैज बीन सपोर्टिंग हर सेल्फ। ठीक है, आप एक टेंस भी पहचान जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो योर टेंसेस, दैट इज व्हाई व्हेन वी वर डूइंग टेंसेस, योर टेंसेस नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, question number 7, again it is from the passage. Now we have read the passage. So the passage is, what is this passage about? This passage is about a special tradition, of course, that this, what is the tradition कि खाना बनाया जाता है. So this is about a special tradition. Dash, I can tell prices in Japan have not risen for the past 20 years. अब इसमें क्या, हम कभी किसी को बोलते हैं ना, जहां तक मुझे पता है ये तो ऐसा ही होगा. So as far as I can tell, C is the right answer. As far as I can tell, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी समझ है, prices in Japan have not rises for the past 20 years. Moving on to the next question. This is, I think, from the same passage. The passage we were doing, this Milpalta passage. Okay, so they are asking that every year same people organize the meal. No, not same people organize. हमने देखा था कि हर साल अलग अलग लोग जो हैं वो मील को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. Lots of people want to organize the meal because it's a very important tradition. Yes, it was written. Okay. Hmm. Famous volcano to Altian, Milpata is famous for Christmas and it feeds huge number of people. So first is wrong and second is right. कि लोग करना चाहते हैं because it's an important tradition. 60,000 meal बन रहे हैं. So first is incorrect and second is correct. D is the right answer. Choose the correct option to complete the sentence. The Turkish national football team will never win a major tournament. Dash they learn discipline. हम कहते हैं ना, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम फर्स्ट नहीं आओगे. So unless you work hard, you will not succeed. So Turkish national football team will never win a match tournament unless they learn discipline. जब तक वो discipline नहीं सीखेंगे वो मैच नहीं जीत सकते. All right. So these were the 20 questions. If you have any doubts, any discrepancies, you may write it to me. We will resolve it together. This is the answer key for the first mock test. I hope you are solving the mock test and you are preparing well for your exams. All right. Thank you, everyone. Have a nice day.